ओके सो आज हमारे साथ हैं सुदीपन जी, जो कि एक को फाउंडर हैं एक स्टार्टअप में, एक वेब3 स्टार्टअप में, जिसका नाम है यूनिसनर। आई थिंक अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ लिया तो जो माफ करिएगा उसके लिए। जो कि एक वेब3 बेस्ड स्टार्टअप है, और मतलब वेब3 बेस्ड स्टार्टअप है जो कि ऑटोमेशन पे ही उसके साथ वर्क कर रहा है, जो कि मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से सुदीपन जी ही बता पाएंगे। तो सुदीपन जी, पहली चीज तो ये जानना चाहेगा कि आपका स्टार्टअप किस बारे में है, और नाम भी थोड़ा मुझे सही से बता दीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि जब आप एज अ स्टार्टअप वेब3 को किस तरह से देख रहे हो, अभी ये जो वेब3 फील्ड ग्रो हो रही है, ये आप किस तरह से देखते हो कि इसकी क्या ग्रोथ है। और साथ ही साथ जब आप किसी वेब3 डेवलपर को हायर करते हो, लेट्स से अगर आपको हायर करना है, तो आप क्या क्या क्वालिटीज उनमें देखते हो। तो ओवर टू यू। Okay, so as far as the name is concerned, it is unsnarled. So अनस्नार्ड। it basically, yeah. So it basically means disentangling things. So जो प्रॉब्लम्स है करंट वेब3 में, सिक्योरिटी इश्यूज है, हम करंटली कोशिश कर रहे हैं कि उसको एज मच सिंप्लीफाई किया जाए एंड टू द ऑडियंस, ग्रेटर गुड ऑफ द ऑडियंस प्रेजेंट किया जाए. तो फॉर मी एज व्हाट माय स्टार्टअप डज इज वी आर करंटली डूइंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग का ऑटोमेशन. तो करंटली जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा मैनुअल चीजों पे डिपेंडेंट है. दिस इज बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग इन इटसेल्फ रिक्वायर्स बहुत ज्यादा मैनुअल इंटरवेंशन, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट पेन टेस्टिंग, हैकर की मेंटालिटी एंड एवरीथिंग अबाउट दैट. So what we are doing is, with the help of artificial intelligence and machine learning, we are able to bring that thing into a SaaS based automation software जिसमें आप as a, let's say, smart contract auditor, और मे बी कोई फ्रीलांसर हो सकते हैं या फिर कोई भी कंपनी हो सकते हैं जो अपना वेब कोड डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली हमारे प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, अपना कोड हमारे प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं, कुछ एनालिसिस टूल्स रन कर सकते हैं, उसके बेसिस पर आपको एक रिपोर्ट जनरेट होकर मिलेगा कि दीज आर द वल्नरेबिलिटीज इन योर कोड. ठीक है, दीज आर द प्रॉब्लम्स इन योर कोड. उसके बाद जो बग्स हैं वो आपके डेवलपर्स इजीली फिक्स कर पाए. दिस इज ऑल अबाउट इट. एंड as far as what I consider Web3 today, it is basically all about a community. So what we are planning in our software is we are building a big community of hackers, auditors, as well as developers. Why we are building this community? So that they can interact with each other. There is a big problem between the developers connecting with the auditors or hackers, because that is why we need companies bridging them. Right, there are auditing companies, there are developing companies, right? So we need a bridging some link, and that link is what we are providing through our software, which is named as DetectBox. गॉट इट, नाइस। सो आप इस पूरी चीज को ब्रिज करने के उसमें हो। Yes, definitely. We are bridging the developers with the auditors, where definitely the developers will also be able to do the auditing process very easily. But if in any case they want to connect with the freelance auditors, they'll be able to do it through our software. ओके तो मतलब कि ओपन जिपलिंग जैसे बहुत सारी कंपनीज है जो ऑडिटिंग प्रोवाइड करती हैं, वो लोग मैन्युअली करती हैं, बट आप ऐसा टूल्स पे वर्क कर रहे हो जो कि ये सारा पोर्शन पूरा ऑटोमेशन पे ले आएगा, और उसमें फिर ज्यादा Yes. मतलब ऐसा आपको पूरा वर्क नहीं करना है, वो आपका टूल पे आप डालोगे और वो बता देगा कि देखो यहाँ यहाँ गड़बड़ है, इसको सही करना है, राइट? Yes, अगर exactly. And our vision as a like, I have been working over 1 year, and I have been working for a Bangalore-based tech startup also. Like, I'm building their stealth Web3 extension. Plus, I'm also working with Nikhilesh Sir. He has already built with Saga, so I'm building with him Midstorms, right? So Midstorms, what Midstorms does is, it is a community of mothers where we can monetize the skills which mothers have through NFTs. okay. Right. So I am working towards building that also. So over the few 12 or 13 months that I have worked, what I have seen in Web3 is it is all about finally working and building a better, more secure community. Because let's say we are having a large amount of DeFi hacks today. Because this year we had a big hack, which was basically the wormhole exploit. Okay. And that hack could be entirely prevented if we could have done some better optimizations on the smart contracts. Right. So what our vision as a
let's say larger vision for me as an entrepreneur is to make the Web3 community a more secure community. That is the bigger vision of Ansnal, and that is what we are going to create over the few years. Nice, nice. Okay. So मतलब कि So अभी आप for वो जगह पे वर्क कर रहे हो? all the yeah, so मैं currently मैं undergrad हूँ IIT BSU में. So I am here as a student as well. Other than that, I am also working for my own startup. I'm building it. Other than that, I'm also working for Miss Doms. I'm building the mothers community. So as an entrepreneur, I think at this age, it is a lot about, as far as Web3 is concerned, it is a lot about exploring things out at this age. Because I'm a second year right from IIT base. So at this age, if you rethink about a lot of things currently, then what will happen? What can happen with me? Like if I think that what will happen with me over the next 5 years, then things won't work out at this age because we are not industry experienced people. We need to gain that industry experience over some years. So I'm currently working over that, and that's it. And the third point, which you said, like when I'll be hiring Web3 developers. So what I'll be looking into is currently, since I'm running a startup, what I have learned over these few months is in a startup, when we are building initially, then we need more of hustlers than more of much tech savvy people. Right. So what I currently look into is what is your mentality towards Web3? Right. When I would be hiring for any Web3 developer, so let's say if my vision and the way I look into it, if let's say he does not match that vision also, but let's say he improves my vision, he can add some definite things that will lead to a better future, definitely better future for humanity, right? I'll definitely consider that because tech is something that as far as I am from IIT, I think that tech is something that can be cracked because today tech is not something that is limited to, let's say, tier 1 colleges of India. Like tech can be solved by even tier 2 and tier 3 colleges of India. So it is all about the mindset which we need and which I think can be made with better people. Right. So recently, I'll also be attending the Polka Dot event. Okay. Which will be happening in Bangalore and I think Delhi. So I'll be attending that. And I'm also organizing some college events in association with Polygon. So these are some big things we need to explore into, where our job as a Web3 entrepreneur, I think, as a Web3 entrepreneur, it is not about just building our product and let's say scaling our business and not inspiring the youth. So what I think is, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं not only I will build my product, I don't know whether our business, our startup will be successful or not. I definitely have a conviction that I'll be able to build it along with my team, right? But definitely, other than that, it is also about inspiring people because the Web3 culture is very low in colleges. I'll tell you something that is very good in India, that in the tier 2 and tier 3 colleges, the Web3 culture is better than the IITs. Right. This is a very good sign that they are adopting such things. And we need to have this in IITs. And I think that can be better done with collaboration with YouTubers as well, since you are very big content creators. And I think your reach is far better than our reach as entrepreneurs at this stage. And I think through you, I'll be able to inspire a lot of people there in India. Because if I as a youth can explore Web3 till this level that I am building my startup, I have worked in so many places, and I think many people in India can, many youth in India can. But the thing is that in Web3 there is a basic problem. जो इंफॉर्मेशन है ना वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, मिलता नहीं है. आप अगर ऐसे भी सर्च करेंगे अबाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, तो या तो दे विल बी अ बिट मिसलीडिंग, ठीक है, कहाँ से आप करेंगे, आपको रिसोर्सेस नहीं मिलेंगी, ठीक है. So that is a issue that definitely I think some Web3 entrepreneurs will be solving in the near future. I definitely will contribute towards it as a founder myself. But I think that can be done in a far better way because हमारा जो YouTube है, YouTube में जो अभी content बहुत ज्यादा spread out है,
right? So Web3 में ना मतलब there's a problem which I personally faced when I was doing Web3 development, ठीक है? और वो प्रॉब्लम क्या था कि मैं अब तो देख रहा हूँ कि देयर आर सेवरल चैनल्स, लाइक जैसे यू हैव अ चैनल एंड वहां पर भी डी ऐप डेवलपमेंट के भी वीडियोस हैं, ठीक है? तो अभी जो लास्ट 6-7 मंथ्स में जो Web3 चैनल्स का जो ग्रोथ हुआ है, दैट इज लाइक मैसिव, राइट? सो जो मैंने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ लॉकडाउन विच आई हैव स्पेंट, मैं कभी से ऑलमोस्ट Web3 एक्सप्लोर कर रहा था. I was into it because I was interested in cryptocurrency. Like at that time, there was Pi which came into the market. So I was interested in Pi. And then I got to know about cryptocurrencies and then all about Web3. And when I started exploring, the basic problem which I faced is when I go into YouTube, there are several sort of content, but it is not organized. Right. Like there are many things which I know, but it can't happen always, right? That in every programming language I go and start off with hello world. Right. Because I cannot do that because there are many things I know. So, but according to human mentality, what will I do? I'll start from the first video, right? Right. So I think there will be in future some customized platform where there will be organized Web3 things. And I think that will be inspired from YouTube as well. Definitely, I think creators would be playing a big part in that. राइट, ओके. सो मतलब कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो आपने जो पॉइंट बोला कि आईआईटी इस समय जो है वो इतना Web3 पे एक्सप्लोर नहीं कर रहा है और प्राइवेट कॉलेजेस टायर 1 जो मतलब टायर 3 टायर 2 है, इस तरह के कॉलेजेस कर रहे हैं. आई थिंक वहां पे मेन आई थिंक वजह है वो पैसा है. क्योंकि जब आप आईआईटी में हो तो आईआईटी में आपको पता है कि आपको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है ना. आपको पता है कि आपकी जो एवरेज एक इनकम होगी वो 12 लाख से शुरू होगी, 15 लाख से शुरू होगी. बट यही चीज जब एक टायर 2 टायर 3 का कॉलेज वाला आता है तो उसको पता है कि अगर वो कैंपस प्लेसमेंट में बैठेगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा जो एवरेज सैलरी है वो 3-3.5 लाख, ज्यादा किसी अच्छे कॉलेज में हो तो 6 लाख तक पहुंच जाएगी. राइट. सो आई थिंक वहां पे भी Web3 कल्चर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि Web3 में वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं. आधे से ज्यादा जो ऑडियंस है वो एक्सप्लोर करने के लिए Web3 नहीं आ रही, वो इसीलिए आ रही क्योंकि उसको दिख रहा है पैसा है यहाँ पे. आई थिंक ये चीज ठीक है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि एक टाइम के बाद ये जब सैचुरेट हो जाएगी मार्केट तब उतना पैसा नहीं रहेगा. आई थिंक इस समय जो डेवलपर्स की नीड है वो वैसे नहीं होने चाहिए जो बस पैसे के फंसे हुए हैं. उनको थोड़ा अपना माइंडसेट बड़ा करना होगा पैसे को छोड़ के. राइट. हाँ, तो एग्जैक्टली बिकॉज इनोवेशंस आने चाहिए ना. जब तक इफ इनोवेशंस डू नॉट कम तब ग्रो कैसे होगा मार्केट, राइट? राइट. तो मेरे हिसाब से सिंस एवरीवन इन आईआईटी इज नाउ इनटू मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एआई मशीन लर्निंग एंड ऑल दिस, राइट? सो उन्हें पता है कि उनका पैकेज तो सेट है, ठीक है, मिलने वाला है, ठीक है. तो my point is if they're sure that they are going to crack SD, right, why not to explore something a bit up a notch, right? And I think the ecosystem can be built with IITians because there is some sort of brotherhood between several IIT alums as well, right? So that is a big point which we can take into consideration and we can build a very good Web3 ecosystem. And I think India has that potential because India is a like power unit of tech people, right? So what we are doing all over the world, everyone knows, right? From Sundar Pichai to Satya Nadella, what we are doing as tech peeps. So we know that. So if India has so much manpower, right, and it is about community, and when it comes to community, then we need a lot of people, right? And when we need a lot of people, and then if Indians come into picture, then I think a big Web3 community can be formed, and Indians will be able to form that tech part of that Web3 community, and they'll be able to grow it very wisely. So I think IITs need to come up with blockchain clubs as well as blockchain seminars, which I am trying to do at IIT BSU currently. So what I'm trying to do is I'm trying to organize seminars. I'm trying to organize 2 to 3 day hackathons events where I will be doing partnerships with some good blockchain companies, and I'll be calling in some good speakers. Not only I'll be sharing my experience because I think still there are far more better people who will be able to come and they'll be able to share their experiences because what I can say, they have 10 times more experience than me. So I think as an
entrepreneur myself at this age, I'll be able to inspire the youth, but more than that, I'll be able to bring in more people. We'll be able to grow a community, because community is the key. When you are building Web3, community is the key. Just because even if you see some big companies today, like even if you see Polygon, then where did Polygon become so big, right? Polygon became so big because of the great community engagement which it brought through. Right. It cracked the community engagement, right? So currently, I also have along with me as co-founder a Polygon fellow, right? So Yeah. he is also working with me. So the thing is that these programs which Polygon is organizing, these are really appreciable. It is organizing fellowships, right? It is organizing hackathons. These are very essential, and I think this culture particularly needs to grow up in IITs, because we are leading the tech of India in some sort of the way, right? So if we get into this picture, then I think Web3 can be a better future. And as a founder of Ansnal, I think I'll be able to contribute into securing these communities far better, I think. आई थिंक एलिमेंट यहाँ पे जो आईआईटीज में नहीं जान मतलब आईआईटीज वाले जो स्टूडेंट्स है वो भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज रिस्क एक एसोसिएटेड है, राइट? वेब3 के साथ एक अननोन है। जैसे कि अभी लाइक आपने बताया कि बहुत ही कंजेस्टेड है ये, राइट? हमारा जो वेब3 का पूरा एक वो है, तो कंजेस्टेड है, तो लोगों को डर लगता है कि पता चला गए कुछ हुआ नहीं, कल को कुछ भी हो गया, बैन हो गया, तो इस तरह की चीजें हैं। फिर एक क्वेश्चन और था मेरा यहाँ पे कि एक बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के मन में डर रहता है कि वेब3 में जाएंगे, पता नहीं मतलब डिग्री चाहिए कोई, या फिर ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई डिग्री मिल जाए, मतलब कुछ हाई क्वालिफिकेशन वाली डिग्री का थोड़ा उनके मन में थोड़ा रहता है। लाइक सिंस यू आर इन आईआईटी बीएचयू, सो लाइक अभी आपने बता ही दिया कि इतनी जरूरत यहाँ पे आईआईटी बीएचयू में भी इतना कोई माहौल नहीं बना है वेब3 को लेकर, राइट? सो मैं ये जानना चाह रहा था कि इस पर्सपेक्टिव से कि जब आपने शुरू किया, तो अभी यू स्टार्टेड इन कोविड, राइट? ड्यूरिंग कोविड और समथिंग, सो कोई डिग्री नहीं पढ़ी उसके लिए कि एवरीथिंग इज डन बाय योरसेल्फ ओनली, कि हाँ मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, क्या रहा वो प्रोसेस और क्या डिग्री की जरूरत है? सो इट इज जस्ट लाइक कि अगर मैं बोलूँ कि आज कल को एक नया फील्ड निकलता है, एंड उसमें अगर मैं बोल देता हूँ सारे कॉलेजेस को डिग्री निकाल देने के लिए, सो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल, राइट? सो फ्रॉम आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू, एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन गोस, आईआईटी के तरफ से आई डोंट थिंक एट करंट पॉइंट वो फीजिबल है कि ब्लॉकचेन के ऊपर कोई डिग्री वो निकाले। एंड क्योंकि इफ वी सी ना कि एआईएमएल कब आया था, it had come far before, right? And some IIT like तो IIT गुवाहाटी आया था, IIT हैदराबाद में अब जाके AIML के बीटेक कोर्सेस आए, राइट? ठीक है, तो this is the time gap which is taken to change the minds of the people, right? but the thing is that कि what matters is your zeal, और अगर सीखना है तो तुम, आज तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ओवर 6-7 मंथ्स इतना ज्यादा यूट्यूब ग्रो किया है, आज मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई यूट्यूब से भी सही से सीखता है तो उसे कोई डिग्री की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज वेब3 में कंपनीज नो कि आईआईटी ऐसा कोई डिग्री प्रोवाइड नहीं करती, या फिर कोई बाकी कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज ऐसी डिग्री प्रोवाइड नहीं करती। तो अगर मुझे कोई ब्लॉकचेन डेवलपर हायर करना है तो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स करना है, तो इफ समवन गेन्स दो स्किल्स, ठीक है, तो आई डोंट थिंक इन दैट केस डिग्री इज सच अ बिग फैक्टर। अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक, आपको जॉब लेने जाना है, आपके पास एक सिंपल सॉफ्टवेयर डेवलपर का या फिर कोई एक कंप्यूटर साइंस की डिग्री है या फिर कोई भी एक ब्रांच की डिग्री है, क्योंकि ब्लॉकचेन के केस में क्या हो गया ना कि you do not need a maybe CS degree, or let's say even if it is a metallurgy degree, even if it is a mining degree, it won't matter, ठीक है? ये क्यों नहीं मैटर करेगा? क्योंकि ब्लॉकचेन के केस में तो कोई ऑफिशियल डिग्री ही एग्जिस्ट नहीं करती। जब कोई ऑफिशियल डिग्री ही एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे एसडी के केस में फेवर हो जाता है कि सीएससी वाले स्टूडेंट्स आर मोर फेवर्ड ओवर अदर ब्रांचेस, ठीक है, मोर कंपनीज ओपन फॉर दोज who are there in CSC, MNC, because that is the harsh truth and we have to accept it. But since blockchain is a growing ecosystem, ठीक है, तो मैंने काफी सारे फाउंडर्स से बात की है ब्लॉकचेन पे, ठीक है, एंड आई हैव आल्सो वर्कड विद फ्यू, राइट? तो मेरे पास तो करंटली ऐसी कोई डिग्री है नहीं, ठीक है, तो इफ आई कैन वर्क, ठीक है, एंड इफ दे आर एंथुसियास्टिक टू टेक मी इन, एंड मोर ओवर आई एम सेकंड ईयर अंडरग्रेड, राइट, सो मेरे पास तो मतलब उस तरह से देखेंगे तो फिर डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, बट इट इज जस्ट दैट I am able to learn things much faster at those skills, और skills के basis पे I have reached where I am currently. Right.
और ये स्किल्स डेवलप कैसे हुए, लाइक कैसे ओवर द पाथ, क्या डॉक्यूमेंटेशंस रेफर किए गए या फिर लोगों से इंटरेक्ट किया गया, कैसे ये स्किल्स डेवलप हुए कि एक कंपनी खुद की शुरू करी, और इस कैसे हुआ ये? यस, तो मैं कंप्लीटली अपने जेई जर्नी से ही थोड़ा सा पॉइंट आउट करना स्टार्ट करता हूँ, तब आई थिंक मेनी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिलेट टू इट। तो आई वाज देयर, आई कंप्लीटेड माय जेई, वो खत्म हुआ था अराउंड लास्ट ईयर अक्टूबर, ठीक है। And after that, I came into first contact with ECEL, that is entrepreneurship cell at IIT BHU, and I got Okay. interested into blockchain, etc. But like I said, I was into Pi, so I was interested in cryptocurrency. I had studied about that in JEE. So since we are very focused during our preparation, तो माइंड डाइवर्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे ही आई गॉट इनटू आईआईटी, जैसे ही मेरी वो फर्स्ट मॉक की रिजल्ट निकले कि अब हो जाएगा आईआईटी में, तो आई लेफ्ट एवरीथिंग और मैंने सोचा कि अब तो हो जाएगा, अब आई एम इनटू द थिंग्स व्हिच आई लाइक। तो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो आई वाज इनटू एंटरप्रेन्योरशिप सेल, आई was exposed to the startup culture right here at ESL IIT BHU, and it's a fantastic culture because I can say what IITs are doing towards entrepreneurship, little deviating from your question for 2 or 3 minutes. So what the entrepreneurship culture is today in IITs, it's fabulous because what kind of support we are getting, I think tier 2, tier 3 colleges will be getting over the few years because of the IITs. So that culture is going to spread to the tier 2, tier 3 colleges as well, because IITs are such a good ecosystem of entrepreneurship, which recently, because I am currently in a cohort, right? So ESL IIT BHU is organizing a Build With Us cohort. In this cohort, we have a 5 months plan where right from ideation stage up to your funding, your startup will be taken, right? And the complete responsibilities will be taken by ESL IIT BHU. They will be mentoring you. You will be associating with personalized mentors who will be associating with you, and they'll be helping you throughout your business journey. So I think that was a key factor which started triggering the entrepreneurship in me. Okay. And apart from that, as far as blockchain is concerned, I started exploring some YouTube videos, and then I think GitHub is very popular because blockchain is open source and GitHub is open source. So I think when open source comes into picture, GitHub is so helpful today. So even if someone Googles and says that I want some blockchain resources, right? So there's some links which I guess I'll provide to you. You can provide in the description of this video. So there are these particular links where there is complete roadmap of, let's say, blockchain development. So if you just go and read those articles, right, and you make notes, and let's say you see some videos, and you continuously do some projects, because according to me, what is more important I have learned over the years is it is not about reading theory, it is only about application. Right. Because unless and until you apply, blockchain is such a practical thing. If you don't apply anything, you'll not be able to get into it. Like the feel won't come to you. Right. So what I did is I did that blockchain roadmap very fast. And then I got into applications. Like I developed some D apps, right? And initially it is, if you are getting demotivated, then that is not a problem, because you will get demotivated in startup culture also. In startup every day, like whenever I'm not able to execute something, we get demotivated. But then we need to find, when we get demotivated, we need to find that one reason, right? Why we were doing that particular thing, and then we need to get up again and do that thing. Right. So I think that is important. I was also getting frustrated. What I did is, initially when I was getting frustrated doing my blockchain during December when I joined college, so what I did was कि मैंने काफी सारे YouTube पे अब वो DApp के कोर्सेज देखना शुरू किया कि मतलब कैसे करूं, कुछ बेसिक DApp कैसे फॉर्म करूं। तो जैसे ही मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स कर लिए, गेन सम कॉन्फिडेंस कि नाउ आई विल बी एबल टू डू इट। तो उसके बाद मैंने कुछ ऐसे ही ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स उठाए, जैसे मैंने कुछ NFT मार्केट प्लेसेस क्रिएट किए, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग मार्केट प्लेसेस क्रिएट करे, ठीक है। कुछ मैंने देख के किए, कुछ खुद से किए। देख के करने में देयर इज नो प्रॉब्लम अनटिल अनलेस यू गेन कॉन्फिडेंस कि तुम खुद से कर पाओगे, देख के कर लो, ठीक है। क्योंकि दिस इज द एज ऑफ लर्निंग। अगर तुम कॉलेज में आके भी अगर तुम इस चीज से डरोगे कि व्हाट पीपल विल से, ठीक है, कि अगर मैं देख के कर रहा हूँ, तो दैट इज नाउ हाउ थिंग्स विल वर्क आउट, राइट।
तो पहले तो तुमको सीखना पड़ेगा, और अगर सीखने पे तुम मेंटल बैरियर लेके आते हो कि व्हाट पीपल विल थिंक, देन आई थिंक थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। बिकॉज कॉलेज में, आईआईटीज में स्पेशली, जैसे मैं बोल रहा था कि ब्लॉकचेन कल्चर इतना नहीं है, अगर मैं अपने दिमाग में शुरू से ही फीड इन कर लेता कि ब्लॉकचेन कल्चर तो आईआईटीज में है नहीं, तो मुझे एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, तो मैं जो अभी करंट स्टेज पे हूँ, मैं वो स्टेज पे नहीं रीच कर पाता। राइट? तो इट इज ऑल अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट इन व्हाट यू डू। एंड ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है, बहुत प्यारी चीज है। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है कि तुम्हारा डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब काम नहीं आएगा। एवरीथिंग विल कम इनटू वर्क। ब्लॉकचेन इज व्हाट इट इज, जस्ट कि तुम्हारा जो डेटा मैनेजमेंट है और डेटा प्रोसेसिंग है वो चेंज हो गया, ठीक है, राइट। वो डिसेंट्रलाइज हो गया। एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। बिजनेसेस को अब भी डेटा एनालिटिक्स का जरूरत पड़ता है, बिजनेसेस को अब भी मशीन लर्निंग इंजीनियर्स का जरूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देयर नीड विद गेट ओवर, बट डेफिनेटली इट इज इनेबल्ड विद ब्लॉकचेन, एंड ब्लॉकचेन इनेबल्स इट टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, क्योंकि एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी गाय, ठीक है, मैं जो कह सकता हूँ, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाज वेरी एसेंशियल। ठीक है, तो इतने जो फ्रॉड्स वगैरह हो रहे थे, ठीक है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी देखे हैं, ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट दीज मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, जो कि साइन किए जाते थे। तो इन राइट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई फ्रॉड होने का चांस ही नहीं रहता। राइट? सही तो बात। अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट के कोड के नीड्स मीट होते हैं तभी ट्रांजैक्शन होगा, अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि चीजों को एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके, रूट लेवल पे जाके पढ़ो। लाइक व्हेन आई गॉट इनटू ब्लॉकचेन ना, पहले तो ऐसा लगता था कि भाई ये क्या है, भाई ये तो गया, दिमाग के ऊपर से जा रहा है। राइट? तो दैट इज व्हेन यू नीड टू कम टू द बेसिक्स। राइट? तो एकदम कंप्यूटर के बेसिक्स तक पहुंच जाओ, रजिस्टर्स तक पहुंच जाओ। ठीक है, व्हाट इज अ रजिस्टर, हाउ डज अ रैम, हाउ डज अ रोम वर्क आउट। ठीक है, तो जब तुम कंप्यूटर आर्किटेक्चर अच्छे से समझने राइट। लगोगे, ठीक है, तब तुमको समझ में आएगा कि हाउ इज माय कंप्यूटर चेंजिंग। ठीक है, हाउ इज माय एक्शंस चेंजिंग व्हेन आई एम गेटिंग इनटू ब्लॉकचेन। राइट? राइट। हाउ इज डिसेंट्रलाइजेशन हैपनिंग। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई वुड से एवरीवन शुड एक्सप्लोर इट। जाना है नहीं जाना, इट्स कंप्लीटली योर टेक। ठीक है, एक्सप्लोर कर लो। ठीक है, बिकॉज इट इज समथिंग, इफ यू डोंट एक्सप्लोर यू विल मिस इट। इट इज वेरी राइट। इंटरेस्टिंग। राइट? बिकॉज एंड मोर इंटरेस्टिंग इज कम्युनिटी बिल्डिंग। क्योंकि जैसे जैसे तुम अंदर घुसोगे, ठीक है, तुमको पता चलेगा कि कम्युनिटी कितना पावरफुल होता राइट। है। क्योंकि कोई भी अगर मतलब कोई एक यूनी बॉडी अगर डिसीजन लेती है, उसके जगह अगर मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर अग्री, तो तुम सोच ही सकते हो कि कितना बेटर डिसीजन होंगे। राइट। राइट? सो इट इज ऑल अबाउट दैट, एंड आई थिंक through me, through your video, I think many people in India will get inspired today. And uh, moreover, it is not getting just inspired. I think entrepreneurship अगर तुमको एक्सप्लोर करनी है तो तुम कर सकते हो। इट इज डेफिनेटली नॉट अ नेसेसिटी, बट एक्सप्लोर ब्लॉकचेन। अगर तुमको, मतलब आई वुड से ब्लॉकचेन इसलिए एक्सप्लोर करो बिकॉज इट इज वेरी फैसिनेटिंग। राइट। एंड कुछ में भी तुम्हें इंटरेस्ट आ सकता है, बिकॉज देयर इज मेटावर्स। राइट? गेम्स राइट। में तो सबको इंटरेस्ट आता होगा। तो गेम्स बैकएंड में क्रिएट कैसे हो रही है, वर्क कैसे कर रहा है, हाउ इज मेटावर्स वर्किंग, दैट इज एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग। राइट। और जब तुम मेटावर्स में घुसोगे तब तुमको कम्युनिटीज पसंद आने लगेगी। यू विल बी जॉइनिंग इन कम्युनिटीज, यू विल बी इंटरैक्टिंग, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड आई वुड से कि अब नॉलेज इतना ज्यादा कम्युनिटीज के थ्रू डिसेंट्रलाइज हो रहा है कि अब आई थिंक नो प्लेटफॉर्म इज a unibody for content. राइट। Like a few years back, we were only having YouTube, right? 2 to 3 years back. अब लगता है कि there are several places, like even you can join several Discord communities. वहां पे reach out करो लोगों को, ठीक है? राइट। और अगर if you are going into entrepreneurship, जैसे what I do personally, एकदम मतलब without any hesitation, reach out करो LinkedIn में, ठीक है? कि I am building this, I am interested in this, and people are ready to help. Because Web3 में I literally will say people are ready to help. ठीक है, because राइट। they also want कि Web3 का culture grow हो. That is what is my take on Web3. And I think we can go on if we have some questions from your end. नथिंग, बस सही है, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से सुदीपन आपने बताई। uh, यही कहना था कि अभी जो आपका स्टार्टअप है, अभी इसको आगे लेके क्या प्लान है, क्या अभी क्या किस स्टेज पे हो आप, आगे क्या सोचा है, फंडिंग वंडिंग लेनी है कि बूटस्ट्रैप करना है, कुछ है अभी के लिए प्लान, किस स्टेज पे अभी आपका स्टार्टअप?
तो करेंटली हम लोग जो एमवीपी बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एमवीपी में हमारी अभी काफी सारी मॉडिफिकेशंस हो रही है। बेसिक एमवीपी जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। So हाँ what we are currently planning is उस पे थोड़ा सा modifications करते हैं और we wait for some time and then we launch our product. And उसके अलावा as far as things go out, I'll work on building a community of hackers, auditors and developers, which I was saying. मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, I'm working closely on it. And ये जो इन्वेस्टमेंट और इसकी बात आई तो आई थिंक currently what I would say is Web3 में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का सीन is a bit, you know, currently a bit, you know, down. The graph is going a bit down currently. क्रिप्टो इज So डाउन I am not currently planning of any investment. I'll reach out for grants because currently I am getting incubated. So I'll be soon getting incubated under maybe either IDAPT or Cisco's incubator. So these are two big incubators there in our college. So I'll be getting grants from that. ठीक है तो थैंक यू सो मच सुदीपन मतलब आपने बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताई आई होप बहुत से लोग इंस्पायर होंगे कि एक सेकेंड ईयर में स्टूडेंट होके भी आप इतने आगे पहुंच चुके हो और ये आई थिंक जब आप कोविड के टाइम से बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इस चीज़ को करने में राइट। तो आई होप जो भी चीज़ है वो सब कुछ आपके ऊपर ही है मतलब आप जब अपने से कुछ करने की सोच लेते हो तो आप कर ही लेते हो उसके लिए फिर आपको कोई डिग्री एज सच नहीं चाहिए किसी कॉलेज से आपका होना जरूरी नहीं डेफिनेटली इस केस में आप एक लकी मैं कहूंगा लकी भी नहीं कहना एक गलत तौर होगा बट हाँ आप एक एज पे हो बिकॉज आप एक अच्छे कॉलेज में हो जिसके लिए आपने डेफिनेटली मेहनत ही की है। बट स्टिल जो लोग अभी यहाँ पे ये मत सोचो कि आईआईटी बीएचयूस हैं ये सोचो कि आईआईटी बीएचयू अभी कुछ ज्यादा कर भी लेवल 3 में बट स्टिल ही इज मेकिंग अ गुड इम्पैक्ट राइट। सो आई थिंक ये जो इंपॉर्टेंट चीज है सबको लर्न करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच सुदीपन फॉर योर टाइम। फिर मिलते हैं किसी टाइम आपका Thank you. स्टार्टअप और ग्रो हो जाए तो फिर हम लोग एक और इस तरह से करेंगे और आप फिर बताना कि अब आपको डेवलपर्स हायर करने हैं तो हमारी कम्युनिटी में काफी डेवलपर्स हैं आपको शायद वहां से डेवलपर्स भी मिल जाए। ठीक है तो थैंक यू Thank सो you. मच। Thank you, Kshitij. Thank ओके you. ओके Thank थैंक you. यू सो मच Okay. ओके बाय बाय गुड नाइट। Bye bye. Good night.